Press. So, we ready? First question. Who is the current Prime Minister of India? So it is a very easy question. You all know about that. Who is the current Prime Minister of India? That is Sri Narendra Modi. But who is the first Prime Minister? Who is the first President? Who is the first woman Prime Minister? ये आपको याद होना चाहिए. ठीक. Second question. Which country hosted the Voice of Global South Summit virtually in late 2025? अब ये क्वेश्चंस बहुत बच्चों को नहीं पता, तो नोट इट या स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत कि ये क्वेश्चन नहीं पता है. ठीक है. द आंसर इज इंडिया. अभी G20 सम्मेलन हुआ था ना, याद है? हाँ. नेक्स्ट. Who was appointed as the chief of the army staff in India? That is General Upendra Dwivedi. Okay, he is the chief of the army staff of India. Next, which country officially became a permanent member of the African Union to further boost its global South partnership recently? The answer is India. Via G20 push, the African Union itself joined the G20 bloc permanently. Next, what massive green energy plant is India building in Khavda, Gujarat, recognized as the world's largest renewable energy park? That is Khavda Renewable Energy Park. Namu, the answer is mentioned already in the question. तो कई questions के answer question में ही छुपे होते हैं. Next, which Indian city hosted the spectacular International Army Scout Masters competition? That is Jaisalmer. Okay. Next, what is the name of the AI chatbot introduced by the Indian Railways to help passenger book tickets and check status effortlessly? Again, I am repeating. What is the name of the AI chatbot introduced by the Indian Railways to help passengers book ticket and check status effortlessly? And the answer is AskDISHA. So the AI name is for the Indian Railways, that is AskDISHA. Next, which state recently introduced India's first digital public infrastructure portal for farmers called Sathi? Which state recently introduced India's first digital public infrastructure portal for farmers called Sathi? And the answer is Bihar. Okay? Yes, that is Bihar. Going to the next question. Who is the current president of United Nations General Assembly? UNGA. Current president of the United Nations General Assembly. That is Philemon Yang. Philemon Yang. Okay. Now, ready for the next question. Which Indian state became the first to fully implement the Unified Pension Scheme, UPS, for its employees in 2025? That is Maharashtra. Unified Pension Scheme is implemented in the Maharashtra. Now, what is the name of the major deep sea exploration project launched by India to study ocean resources? That is Samudrayan mission, Matsya 6000. Okay, Samudrayan mission, Matsya 6000. Next, with which sport is the famous Indian player target shooter Manu Bhaker associated? Manu Bhaker associated with which sport? The answer is shooting. So like these, there's a many question. Manu Bhaker associated with which sport? Neeraj Chopra associated with which sport? Okay. And now right now there's a one name. Vaibhav Suryavanshi is associated with which sport? तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है.
Mbappe associated with which sport? Mbappe is associated with the football. Okay. तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. नेक्स्ट, हाउ मेनी प्लेयर्स आर ऑन द फील्ड फॉर अ सिंगल टीम इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल? वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं फ्रॉम अ सिंगल टीम? ठीक है, एक टीम में वॉलीबॉल में टोटल 6 प्लेयर्स होते हैं. ठीक है. हॉकी, फुटबॉल एंड क्रिकेट में 11 होते हैं. ठीक है. विच ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियोस में कवर कर रखा है. ठीक है, कि किस किस में कौन कौन से प्लेयर होते हैं. अगर आपने देखा है तो वेरी गुड, नहीं देखा है तो फिर देखो. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे ऑलरेडी 150 क्वेश्चंस लास्ट 3 वीडियोस में हो चुके हैं. ठीक है. तो फिर से 6 प्लेयर्स इन द वॉलीबॉल टीम. नाउ नेक्स्ट, which trophy or cup is awarded to the winner of the top domestic first class cricket championship in India? The answer is Ranji Trophy. अब Ranji Trophy इंडिया की होगी, but there is a one tournament which is played on the grass court, a tennis tournament which is played in the grass court. बाकी टूर्नामेंट मैट कोर्ट पे होता है, लेकिन एक ऐसा भी टूर्नामेंट होता है जो ग्रास कोर्ट पे होता है. तो वो कौन सा टूर्नामेंट होता है? दैट इज विंबलडन. ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो याद रखो. व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ जापान? जापान का नेशनल गेम क्या है? तो जापान का नेशनल गेम सुमो रेसलिंग. मोटे मोटे देखे ना. एक, हाँ, एक पैर पड़े तो आदमी उठेगा नहीं, उठ ही जाए. नेक्स्ट, which famous Indian grandmaster won the Pied candidate chess tournament to the challenge for the world's title? ये बात ही अभी नया नया आया है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए. The name is D. Gukesh. The name is D. Gukesh. Now, the term dodge and smash are commonly used in which racket sport? The dodge, smash, deuce, golden. ये 3-4 चीजें वर्ड जो है वो जनरली ड्रॉप, टॉस, ये यूज होते हैं इन द बैडमिंटन एंड टेनिस. ठीक है, बैडमिंटन एंड टेनिस. ठीक है. अब इसके अलावा एक और जो होती है टेबल टेनिस. टेबल टेनिस में जो बॉल होती है छोटी वाली, उस बॉल को क्या कहते हैं? टेबल टेनिस आप सब लोग मैक्सिमम लोग खेलते होगे, देखा भी होगा. टेबल टेनिस जो बॉल होती है उसको क्या कहते हैं? द बॉल इज नोन एज पिंग पोंग बॉल. ठीक है. द बॉल इज नोन एज पिंग पोंग. इवन टेबल टेनिस को भी ये भी कहते हैं पिंग पोंग. Now, who is the first Indian track and field athlete to win 2 consecutive Olympic medals in javelin throw? अब देखो, अभी मैंने बताया ना कि who is currently नीरज चोपड़ा is currently with which sport? The answer is javelin throw. अब जो 2 क्वेश्चन, 2 consecutive Olympic medals, या ये भी पूछता है कि नीरज चोपड़ा किस, या नीरज कौन से प्लेयर ने 2 consecutive ओलंपिक गोल्ड मेडल्स पे जीते हैं, या नीरज चोपड़ा ने किसमें 2 लगातार गोल्ड जीते हैं? दोनों टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. Which sport uses a heavy ball to knock down 10 pins at the end of a lane? तो जितने लोग लुलु मॉल गए होंगे और स्पोर्ट्स सेक्शन में गए होंगे तो उनको पता होगा. दैट इज नोन एज बॉलिंग. ठीक है. 10 की जाती है स्ट्राइक. नेक्स्ट, व्हाट कलर जर्सी डज द इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम वेयर ड्यूरिंग इंटरनेशनल होम मैचेस? तो इंटरनेशनल होम मैचेस के दौरान ब्लू, दे आर ऑफन कॉल्ड द ब्लू टाइगर्स. ठीक है. होम मैचेस में फुटबॉल टीम ब्लू ही पहनती है और उसको ब्लू टाइगर भी कहा जाता है. नेक्स्ट, विद विच स्पोर्ट इज द टर्म चेकमेट एसोसिएटेड? ये तो बहुत ही आसान हो गया, आप सबको पता है चेकमेट किस गेम में होता है. होता है चेस में. लेकिन एक और वर्ड है, स्टेलमेट. स्टेलमेट किस गेम से एसोसिएटेड है?
Stalemate is also associated with the chess. चेकमेट सबने सुना है, लेकिन स्टेलमेट भी चेस से रिलेटेड है. ठीक है ना. द नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ड्यूरेशन ऑफ प्रोफेशनल फुटबॉल मैच एक्सक्लूडिंग एक्स्ट्रा टाइम. अगर एक्स्ट्रा टाइम ना दिया जाए तो फुटबॉल मैच का स्टैंडर्ड ड्यूरेशन कितना है? दैट इज 90 मिनट्स, 2 हाफ्स ऑफ 45 मिनट्स. इवन 90 मिनट्स फॉर द फुटबॉल, फॉर द हॉकी, दोनों के लिए होता है. ठीक है. नेक्स्ट, विच कंट्री इज लेजेंडरी फुटबॉलर लियोनेल मेसी फ्रॉम. अब ये आसान. अब कोई पूछ दे कि लियोनेल मेसी और रोनाल्डो कौन है, दे आर एसोसिएटेड विद द फुटबॉल, बट किस कंट्री से? सो द कंट्री नेम इज अर्जेंटीना. लियोनेल मेसी इज फ्रॉम अर्जेंटीना. ठीक है. और रोनाल्डो, इन विच कंट्री रोनाल्डो इज एसोसिएटेड? Yes, good. That is Portugal. तो आप सबको पता है कि लियोनेल मेसी एंड रोनाल्डो इज द लेजेंडरी प्लेयर्स, बट किस कंट्री से हैं ये बहुत कम लोगों को पता हो. तो ये पता है मुझे. नेक्स्ट, हाउ मेनी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स आर प्लेड इन प्रोफेशनल टेनिस एवरी ईयर? 4. अब देख लो, ग्रैंड स्लैम इन टेनिस. अब ये नाम याद करो: ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन. अब इन चार में से पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस स्पोर्ट के टूर्नामेंट से रिलेटेड है, विंबलडन किस स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट से रिलेटेड है, फ्रेंच ओपन किस स्पोर्ट या यूएस ओपन किस टूर्नामेंट से रिलेटेड है. ठीक है. तो ये याद रहे, ये चारों किससे रिलेटेड है? टेनिस, लॉन टेनिस, नॉट फ्रॉम द टेबल टेनिस, दैट इज फ्रॉम द लॉन टेनिस. ओके. इसमें एक बहुत ही फेमस नेम है इन द लॉन टेनिस, दैट इज रोजर फेडरर, 7 टाइम्स चैंपियन. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट, which part of the plant is responsible for absorbing water and minerals from the soil? अब ये आसान, that is roots. है ना. Next, what force pull objects towards the center of the earth, preventing us from floating away? किस वजह से हम तैर नहीं पाते? That is gravity. ठीक है. Next, which vitamin is rich in citrus fruit like oranges and lemons and helps heal wounds? The answer is विटामिन सी. सिट्रस फ्रूट से विटामिन सी होता है जो हेल्प करता है किसमें? हमारी चोट को हील करने में. चोट जो घाव जो भरते हैं उसमें बहुत ही हेल्पफुल होता है विटामिन सी. तो अगर अगली बार चोट लगे ना तो सिट्रस फ्रूट्स ज्यादा खाओ, जल्दी घाव भरे. ठीक ना. नेक्स्ट, what state of matter has a fixed volume but takes the shape of the container it is poured into? Volume fixed है but it takes the shape, that is liquid. Yes. For the solid state there are 3 states of matter: solid, liquid, gas. Solid तो fixed shape, fixed volume, but liquid है fixed volume but the shape is not fixed. It's taken the place in which it's contained. Okay. And gas, it doesn't have there's no fixed volume, there's no fixed shape. दोनों ही जितने जिसमें ही कर दो उसी में वो भर जाए, उसी की वो शेप लेगा, उसी का वॉल्यूम हो जाए. ठीक है. नेक्स्ट, which gas do human breathe in the survive and release when they exhale? ऑक्सीजन इनहेल, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल. यानी हम लेते ऑक्सीजन है और छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड. What is the process called when a caterpillar turns into a beautiful butterfly? That is metamorphosis.
मेटामॉर्फोसिस सबको पता है कि कैटरपिलर होता है, उससे पहले लार्वा होता है, फिर बटरफ्लाई में चेंज, लार्वा कैटरपिलर फिर बटरफ्लाई। तो लेकिन उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द मेटामॉर्फोसिस। ओके, नेक्स्ट। Which planet in our solar system is nicknamed the red planet because of its iron-rich red soil? Red planet, एक ही planet that is Mars. Okay. Now the next. What instrument is used to measure the temperature of body of objects? Thermometer. That is thermometer. Next. What is the boiling point of the water in Fahrenheit? सबको पता है कि boiling point in the Celsius is 100 degrees Celsius, but in the Fahrenheit, what is the boiling point? In the Fahrenheit, boiling point of water is 212 degrees Fahrenheit. ठीक है? हाँ, इवन 100 डिग्री सेल्सियस जो सेल्सियस में, वो मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया है। फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री। इसके अलावा एक और टर्म आती है, दैट इज केल्विन। अगर केल्विन में पूछ देगा, दैट इज 373 केल्विन। ठीक है? नेक्स्ट। Which organ in the human body pumps blood throughout the entire system? ये आसान है, that is easy, that is heart. पंपिंग का काम एक ही काम चीज करती है, that is heart. Next. What is the primary source of natural light and energy for our earth? वो एक ही है, that is sun. Next. What is the hardest natural substance found on earth? That is diamond. Diamond is the hardest natural substance. Iron से भी ज्यादा. Which is the largest country in the world by total land area? अभी ऐसा. That is Russia. Russia is the largest. Vatican City is the smallest. ठीक है? Which Indian freedom fighter is associated? Which Indian freedom fighter is affectionately called Netaji? तो नेताजी एक ही पर्सन को कहा जाता है, दैट इज सुभाष चंद्र बोस। नेताजी इनको कहा जाता है, चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबू महात्मा गांधी, एंड आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है? तो ऐसे लोगों को याद रखना। ठीक। नेक्स्ट। Which monument is famously known as the signature of Hyderabad? So, signature of Hyderabad, that is Charminar. ठीक। Next. What is the capital city of France? France का capital city, that is Paris. Eiffel Tower यही है ना? Eiffel Tower, Paris, France. Which vitamin do we get naturally when our skin is exposed to morning sunlight? Vitamin D. That is vitamin D. What do you call a baby frog? Baby frog को कहा जाता है tadpole. So the answer is a tadpole. Okay. Next. Which part of our body protects our brain? My body को कौन प्रोटेक्ट करता है? तो आंसर इज द स्कल. इंग्लिश में द स्कल, हिंदी में खोपड़ी, है ना? ओके. नेक्स्ट. Which is the tallest water animal on earth that is also a mammal? Tallest water animal on earth that is also a mammal, that is blue whale. Blue whale अंडे नहीं देती, वो सीधे बेबीज देती है, अंडे नहीं देती है. That's why it's called the mammal. Which Indian state is famously called God's own country? Which Indian state is famously called God's own country? The answer is Kerala. Kerala, UP. है ना? Okay, next. Who was the first woman prime minister of India? First prime minister Pandit Jawaharlal Nehru. Current prime minister Narendra Damodar Das Modi, and
first woman prime minister, that is Indira Gandhi. Okay. First woman president, Pratibha Singh Patil. Current president, that is Draupadi Murmu. And first president is Dr. Rajendra Prasad. Okay. Next, which festival is widely celebrated across India as the Festival of Colors? तो कलर्स एक ही फेस्टिवल में खेला जाता है, दैट इज होली. होली कब है होली? कितने लोगों ने देखी सोली? ओके, नेक्स्ट. Which continent is completely frozen, uninhabited by permanent residents and mostly home to penguins? Penguins कहाँ रहते हैं? यहाँ पर इंसान नहीं रहते, यहाँ पर मैक्सिमम पेंगुइन्स रहते हैं. एंड इट इज अ कॉन्टिनेंट, दैट इज अंटार्कटिका. यहाँ सिर्फ इतनी ठंड होती है, -200 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर पहुंच जाता है. तो यहाँ पे इंसान नहीं रहते, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेंगुइन्स रहते हैं, जो उड़ नहीं सकते बट तैर सकते हैं, और इतना तेज तैर सकते हैं जितना तेज आप दौड़ नहीं सकते. पेंगुइन्स आर स्विमिंग at the speed of 32 km per hour. Next, who wrote the famous classic collection of Indian animal fables known as पंचतंत्र? पंचतंत्र किसने लिखी थी? पंचतंत्र आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मम्मी पापा को पता होगा. दैट इज विष्णु शर्मा. विष्णु शर्मा ने लिखी थी पंचतंत्र. छोटे थे तो टीवी में वो भी आता था, पंचतंत्र की कहानियां. ना, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय लैंड एरिया? अब वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या है? रशिया है. छोटा क्या है? दैट इज आई थिंक दैट इज वेटिकन सिटी. तो अब इंडिया का सबसे छोटा कौन सा है? नाम ही उसका ऐसा है कि जाओ और आओ. गो आ. ठीक है, गो वाह, गोवा. जाना और आना दोनों एक ही में हो जाता है. और सबसे बड़ा कौन सा है? दैट इज राजस्थान. ठीक है. So smallest is the Goa, bigger, largest the Rajasthan, but by the coastline, coastline के हिसाब से सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी coastline है, that is गुजरात. ठीक. So these are the 50 questions of today's GK.